Yeah, hi, this is Gautam. So, general insurance can be a very daunting business to understand at first. All right. And if I would tell you that general insurance and banking, the business models are pretty similar, so it would sound very weird, right? So, in this video, let me simplify all this for you. So, if you're a young or an experienced investor, or you're an aspiring equity analyst, or you're a strategy consultant, okay, then in this video, I would help you understand how you can go about and do fundamental analysis of a general insurer. Okay, so please allow me 30 minutes of your time. All right, because I'm going to go into a lot of detail, and by the end of it, you would really appreciate the business model of a general insurer, and you would be able to do fundamental analysis of an insurance company on your own. So, in one of his shareholder letters, Warren Buffett has spoken about how he spots a great business. So what he has gone on to say is a truly great business must have an enduring moat, meaning castle, that protects excellent returns on capital. Okay. But he says in a capitalist society, okay, competitors will repeatedly assault any business castle that is earning high returns on capital. Okay. He also goes on to say there is no one formula in finance that you can use to measure business moats. Okay. But the all-encompassing metric that comes closest is return on capital, or ROE, for financial services. So a business, okay, which is able to demonstrate, let's say, a high ROIC or high ROE in the case of financial services, if a financial services business is able to deliver a high ROE for a prolonged period of time, okay, then it is able to do so because it has moat. उसके पास ऐसा कुछ है जो से कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है, इसलिए वो एक हाई रिटर्न्स ऑन इक्विटी डिलीवर कर पा रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको आरओई बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो हमें पहले देखना है और एनालाइज करना है कि आरओई अगर ज्यादा है तो क्यों है, कम है तो क्यों है. ओके, वो फैक्टर्स हमें एनालाइज करने हैं. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. So first let's understand the drivers of ROE. Okay? ROE क्या होता है? PAT divided by equity, मतलब per rupee or per dollar of equity, what is the profit that you are making? That is your ROE. कितना रिटर्न कमा रहे हो अपनी equity पे. Okay? और ROE can be expanded into, broken up into two parameters. One is your ROA, return on assets, which is essentially PAT by assets, मतलब per rupee of assets, how much profit you are making. Okay? And then leverage is assets divided by equity, मतलब per rupee of equity कितने assets you have on your balance sheet. Okay, so that's the simple. And of course अभी हम सीखेंगे ये है क्या. अभी तो ये बस एक theoretical understanding है. Okay, हम इसको भी अप्लाई करेंगे, सीखेंगे इसका मतलब क्या है. Okay, right. तो अगर हम financial services business की हम बात करें, okay, so why is ROE important in the first place? If you see this snippet that I have here, long-term stock compounding for financial institutions, okay, they follow book value per share compounding, which in turn depends upon the company's ability to deliver high ROE over the long term. Okay, तो again ये kind of reinforce कर रहा है कि ROE is very important. एक अच्छा business एक high ROE deliver करेगा over long period of time. Okay, तो आपको ऐसे बिजनेस पिक करने चाहिए. एक आध बीच में एक आध बार अगर आरओई फॉल कर रहा है तो इट इज फाइन बिकॉज ऑफ समथिंग, लेकिन मोर ऑफ्टन देन नॉट द बिजनेस, अ गुड बिजनेस विल हैव अ हैंडसम आरओई ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ओके, व्हेन आई से हैंडसम गुड, इसका मतलब अगर लेट्स से कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10-11% है तो ROE should be more than 10-11%, should be 14-15%, okay, over extended periods of time. Okay, so that's a very like rough yardstick that you can use. Okay, of course the higher the ROE the better. Let's move forward. All right. So before we understanding कि general insurance or banks or other financial services में क्या देखना है, that is what specifically we need to look and analyze in a general insurer, in a bank, and in other financial institutions. पहले, first let's try to understand the business model of a general insurer and a bank. ठीक है? And I have a very weird headline. It says business model of general insurers is largely the same as banks. Okay? So basically इसका मतलब क्या है? मैं कह रहा हूँ a general insurer makes money largely the same way as a bank. And it's very interesting, guys. Please just follow along for some time. Okay, you'd love it. Okay, तो पहले let's understand a business model for a bank. Okay, तो बैंक का business model क्या है? बैंक क्या होता है? Okay, so we as customers, okay, we deposit our saving, our salary, what have you, with a bank. Okay, and banks, they give us a small interest, on our deposits. So let's say that interest is 4%. Okay, and then bank will give the same money as loan to a different customer.
Okay, so let's say the bank makes 8% interest income on that money, okay, which it has given out as a loan. So the differential, मतलब बैंक made a net interest income of 4%. यही business model है बैंक का. Okay, तो business model का है क्या बैंक का? यही कि interest income earn किया, उसमें से you net out this 4%, which is cost of fund or interest income expense for a bank, and then the bank is left with 4% as net interest income. Okay, or in that 4%, you of course bank also makes money through fee, थोड़ा fee income से भी bank makes money. Okay, because you can do so many transactions when you have a net banking. You can do so many transactions, and then you net out operating expense, provision, tax. So let's say after adding this and netting all of this out, the bank is left with 2%. 2% is your ROA, return on assets. इसका मतलब क्या हुआ? Let's say if a bank has given out a loan of rupees 100, okay, then it is making 2 rupees as return. That is what ROA of 2% means. ठीक है? Okay. इंडिया में जो लार्ज बैंक्स हैं, we'll see in subsequent slide, HDFC, ICICI, Kotak, these are making ROA of 2% and higher. I think higher than 2%. We'll see that in the next slide. Okay. All right. तो मतलब 100 रुपए देके 2 या उससे ज्यादा रुपए, कब 2-2.5 रुपए कमा रहे हैं. Okay. All right. तो ये this is how business, this is the business model of a bank. Okay. Now, बैंक के केस में जो डिपॉजिट का जो पैसा है, दैट वी एज कस्टमर्स डिपॉजिट विद द बैंक, वी कैन टेक आउट एनी पॉइंट इन टाइम. दैट्स आवर मनी. दैट्स द मनी बैंक होल्ड्स, बट बैंक डजंट ओन दैट मनी. हमारा डिपॉजिट बैंक होल्ड्स, बट इट डजंट ओन दैट मनी. ओके, इट विल गिव अस एन इंटरेस्ट so long as we have a deposit park in the bank. ठीक है, तो डिपॉजिट का केस हो गया फॉर अ बैंक. इंश्योरेंस के केस में क्या होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्लोट. अगर आपने फ्लोट समझ लिया, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोट, trust me, you love this business, and you'll be able to analyze any insurer. You'll be able to pick good insurers for your investments as well. Okay, lot of people, a lot of good investors in the world, they have made a fortune by investing in good insurers. Anyway, so let's understand float pehle. Okay, float क्या होता है? Insurers, they collect premiums from people like us. Okay, uh, but often don't pay a lot of claims until a later point in time, sometimes years later. During that time, they invest the remaining premium money called float, to earn interest income. Okay, float is the money insurers hold but don't own. प्लीज समझो इसे, एक बार पॉज करो, फिर से रीड करो और इसे समझो. Right. So let's understand the concept of float. Okay, and as I said, if you understand the concept of float, you'll get an appreciation of the business model of a general insurer. Okay, so let's say ICICI Lombard, it gets 125 rupees as premium in a given year. Okay, of the 125 rupees that it receives as premium, let's say it sets aside 20 रुपीज रिजर्व कर देता है. 20 रुपीज, ओके, साइड में रख देता है. ओके, ये रिजर्व हो गया. एंड देन 5 रुपीज इट पेज एज प्रीमियम to General Insurance Corporation of India. Okay, so it's left with 100 rupees. ये जो 5 rupees है ना, this is set aside for extreme risky events if they happen, okay, at some point in the future. So then General Insurance Corporation of India, GIC, will come to the rescue. Okay, और ये जो 20 rupees set aside होते हैं, okay, that is also set aside for, let's say, if in certain years there are more claim payments that they need to make than they had originally thought of. So this 20 rupees is set aside for any फॉर जब किसी कुछ सालों में जब क्लेम पेमेंट ज्यादा होते हैं. ओके, तो ये 20 रुपीज ऑफ रिजर्व है ना, दिस इज एडेड टू समथिंग विच इज कॉल्ड फ्लोट. ओके, फ्लोट इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट असेट्स. ओके, ये दिस इज नॉट द पैसा ऑफ इंश्योरर्स, दिस इज द मनी दे होल्ड बट दे डोंट ओन. ओके, अभी ये समझो. ओके, देन सो एनी विच वेज इनके पास ICICI Lombard is left with 100 rupees. Of this 100 rupees, okay, let's say they pay 70 as claim payments in that year. Okay, उस साल भी कुछ claim payments होंगे. And then let's say they pay 28 rupees in expenses, कुछ भी expenses, operational expenses जो होंगे, they pay as expenses. Okay, so they are left with rupees 2. Okay, this rupees 2 is called underwriting profit. Okay, तो होता क्या है?
ये जो 20 rupees of reserve plus this 2 rupees, okay, all this in a way gets added to float, okay, and this process repeats every year, okay, all right. So but if you think of float कि ये so क्या होता है, this plot repeats every year, so the float eventually becomes a very big amount, okay, and they invest that money and earn an interest income on that money, okay. ये बिजनेस है, ये फ्लोट का बेसिकली डेफिनेशन है, okay. Hopefully you kind of understood कि फ्लोट का मतलब क्या है, okay. See, तो यहाँ पे if you try to draw parallels between how a bank makes money and how a general insurer makes money, okay, so let's say investment yield by investing float, okay, by investing float, let's say insurer makes 8%, okay, then there is something called cost of float, yeah, cost of funds for an insurer, that we'll understand in a bit in the subsequent slide, okay. Let's say कोई भी cost of float है, let's say cost of float है, I'm just making it up, 3%, okay, then return on float is, और रिटर्न ऑन असेट्स इज 5%. आई नो अभी हमने समझा नहीं है कॉस्ट ऑफ फ्लोट क्या है, अभी हम समझेंगे, ओके, ऑलराइट. तो लेकिन इफ यू ट्राई टू ड्रॉ पैरेलल्स, व्हाट इट मींस इज कि इंश्योरर, ओके, raises money, okay, at a certain cost, which we'll understand in a bit, okay. It raises money in the form of premiums at a certain cost, okay, and invests that money, and on that money it earns an interest. The differential between the investment yield, the interest income, and the cost at which it raised that money, that surplus premium, is your return on assets. ठीक है, राइट. तो सिमिलैरिटी है बिजनेस मॉडल में, okay, but of course the way they go about making this return on assets, return on float is of course different, okay. So hope you kind of get the understand the business model. अभी समझते हैं कि ये cost of float क्या चीज है. So now let's understand cost of float, okay, in the subsequent slide. Let's move forward. Now, with that, now we have a good sense of business model for general insurer. Okay? Let's see what is it that we need to analyze when we do fundamental analysis of a general insurer. क्या चीजें देखनी है to fundamentally analyze an insurer. Okay, so the first two key things as you saw, first is ROA, okay, and the second is leverage. Combination of ROA and leverage, they drive ROE for a insurer. Okay, ROA just we saw, ROA क्या होता है? ROA होता है आपका differential between investment yield and कॉस्ट ऑफ फ्लोट या कॉस्ट ऑफ फंड है. तो कॉस्ट ऑफ फ्लोट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, और अभी समझते हैं व्हाट इज कॉस्ट ऑफ फ्लोट, क्योंकि ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है फॉर अ जनरल इंश्योरर. सी, बैंक के केस में क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ फंड होता है ना, कॉस्ट ऑफ फंड होता है वो इट्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, इट्स फिक्स्ड, ओके. इंश्योरर केस में कॉस्ट ऑफ फ्लोट जो होता है या कॉस्ट ऑफ फंड बोल लो, दैट मूव्स अप एंड डाउन, ओके. दैट्स तो बहुत डायनेमिक हो जाता है. तो अ वेल रन जनरल इंश्योरर की पहचान है, अ वेल जनरल इंश्योरर विल हैव वेरी लो कॉस्ट ऑफ फ्लोट, लो कॉस्ट ऑफ फंड्स for a prolonged period of time. मतलब ज्यादा there'll be less variability in its cost of float, and a well-run insurer will try to keep its cost of float to a bare minimum level over period of time. Okay? अगर ऐसा कोई इंश्योर कर पाता है तो it will drive higher ROA and in turn high ROE. ठीक है, तो समझते हैं इसे कि कॉस्ट ऑफ फ्लोट क्या, कैसे कैलकुलेट करोगे आप. तो कॉस्ट ऑफ फ्लोट कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए यू नीड अंडरराइटिंग लॉस डिवाइडेड बाय फ्लोट. ओके, तो अगर मैं, तो लेट मी मूव ओवर टू, लेट मी शो यू कि कैसे आप कॉस्ट ऑफ फ्लोट कैलकुलेट करोगे. सी, कॉस्ट ऑफ फ्लोट, आई एम जस्ट शेयरिंग अ लिंक्डइन पोस्ट, होप इट्स विजिबल. Yeah, all right. So in this LinkedIn post, I have the combined ratios of these insurers listed here. Okay. तो कंबाइंड रेशियो का मतलब क्या है, कंबाइंड रेशियो क्या होता है, कंबाइंड रेशियो क्या होता है. Combined ratio of a general insurer is a simple way to measure how profitable the insurer is from its core business. Okay, so let's say हमने अभी एग्जांपल देखा था कि let's say नेट प्रीमियम जो कलेक्टेड है, नेट प्रीमियम कलेक्टेड है वो 100 है. okay? उसमें से क्लेम पेमेंट्स मान लो 70 है. okay? एक्सपेंसेस इज 30. okay? तो जितना प्रीमियम नेट रिसीव किया उतना दे दिया एज क्लेम एंड एज एक्सपेंसेस, तो कुछ बचा नहीं. okay? तो कुछ बचा नहीं, तो अगर इफ दैट इज द केस, देन कंबाइंड रेशियो इज 100. मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस फ्रॉम अंडर राइटिंग. और अगर कंबाइंड रेशियो लेस देन 100 है,
Okay, that means the insurer is making a profit from underwriting. If the combined ratio is greater than 100, that means insurer is making an underwriting loss. Okay, तो इसमें जितने भी 100 से ऊपर हैं ratios, इसका मतलब the insurer is making an underwriting loss. So you see, Net India Insurance is making huge underwriting losses. Go Digit is making some underwriting losses. ICICI Lombard is making small underwriting losses as well. Star Health made an underwriting profit in the first 2 years, and now it's only slightly at a loss. ये पता लग रहा है. Okay? लेकिन क्या इसका ये मतलब हो गया क्या कि अगर थोड़ा सा अंडरराइटिंग लॉस हो गया तो इंश्योर खराब हो गया क्या? नो, नथिंग लाइक दैट. नो, फार फ्रॉम द ट्रूथ. क्योंकि एज आई सेड, ये जो 100 रुपए है ना जो कलेक्ट किया है ना इंश्योरर ने एज क्लेम, उसमें से एक्चुअली कलेक्ट उन लोग ने 110 या 120 किया है. ओके, वो 10-20 रुपए जो 110 120 वो उन्होंने असाइड सेट कर दिया एज फ्लोट. ओके, इवन दो मान लो जैसे आईसीआईसी का एग्जांपल लेते हैं कि 103% है इनका फ्लोट. तो इसका मतलब मान लो आईसीआईसी ने 120 रुपए फ्लोट प्रीमियम कलेक्ट किया. ओके, उस 120 में दे सेट 20 रुपीज असाइड, तो इनके पास 100 रुपए हैं अभी. इस 100 रुपीज में दे गिव 70 एज क्लेम, प्लस दे गिव 33 एज एक्सपेंसेस. तो 103 इन्होंने इनकर किया. ओके, तो जो 20 रुपए असाइड सेट किया था उसमें से 3 हटा दो, तो मतलब 17 रुपीज तो इनके पास अब भी है, उस पर तो ये इंटरेस्ट कमाएंगे. ओके, ऑलराइट, सो दिस इज द लॉजिक. सो इवन दो इफ एन तो मैंने यहां पे यही समझाया है कि इवन दो एन इंश्योरर, ये प्लीज एक बस पोस्ट चेक कर लेना, इवन दो इंश्योरर इज मेकिंग स्मॉल अंडरराइटिंग लॉसेस डजंट मीन इट्स अ बैड इंश्योरर. अच्छा, अब विद दैट अंडरस्टैंडिंग लेट मी, अब हम अंडरराइटिंग कॉस्ट ऑफ फ्लोट कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो आई हैव द स्टार हेल्थ का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ओपन. सो यहाँ पे यू सी स्टार हेल्थ का, एज यू सॉ, कंबाइंड रेशियो 95 था, 97 था, एंड नाउ 101 है. ओके, सो ऑन पेपर दे सीम टू बी डूइंग अ रियली गुड जॉब एट कीपिंग देयर कंबाइंड रेशियोज अंडर कंट्रोल. ठीक है, तो नाउ कॉस्ट ऑफ फ्लोट कैलकुलेट करने के लिए, इसका मतलब यहाँ पे उन्होंने अंडरराइटिंग प्रॉफिट इनकर किया, यहाँ भी प्रॉफिट किया, और यहाँ पे थोड़ा सा लॉस उन्होंने इनकर किया थोड़ा सा. राइट, तो सी, टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ फ्लोट आपको करना है कैलकुलेट खुद से. आपको क्या चाहिए? यू नीड समथिंग कॉल्ड अंडरराइटिंग प्रॉफिट. ये जो ये लाइन है ना, आपको ये चाहिए. तो ये आप देखो, यहां पे इनका प्रॉफिट हुआ है, यहां प्रॉफिट हुआ है, यहां थोड़ा सा लॉस हुआ है. तो क्या करो, यहां पे थोड़ा सा लॉस हुआ है, तो ये 378 लो, -378 अंडरराइटिंग लॉस डिवाइडेड बाय फ्लोट. फ्लोट कितना है इनका? फ्लोट कितना है इनका? फ्लोट इज हाउ टू चेक फॉर फ्लोट. फ्लोट आप इन्वेस्टमेंट असेट ढूंढो, इन्वेस्टमेंट असेट्स यहां पे होगा कहीं मेंशन. हाँ, ये टोटल इन्वेस्टमेंट असेट्स, दिस इज नथिंग बट फ्लोट 17,898. Okay, तो 17,898 CR worth of float year investment assets they have been able to accumulate since the time they've started their business. This is the float they have accumulated over time. 17,898 CR, 18,000 CR they have accumulated as float. तो अगर अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फ्लोट होगा 378 -17,898 अगर करो, दिस वुड बी योर कॉस्ट ऑफ फ्लोट. तो कॉस्ट ऑफ फ्लोट कितना होगा? अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे इनका कॉस्ट ऑफ फ्लोट इज 2.1%. मतलब 2.1% में इन्होंने प्रीमियम रेस किया है. इसका मतलब यही हुआ ना, इनका कॉस्ट ऑफ फ्लोट, कॉस्ट ऑफ फंड इज 2.1%. अगर आप ये मैथ्स करो तो, ये जो मैंने यहां मैथ्स करी है. सिमिलरली 2024 2023 में इनका कोई कॉस्ट ही नहीं था ऑफ फ्लोट. ओके, इनफैक्ट दे वर पेड टू एक्वायर फ्लोट, इसका ये मतलब है. ओके, सो होप दिस वाज, मतलब तो क्या है कि अभी 2% खर्च करके इन्होंने ये पैसा रेस किया है. 2024-2023 में दे डिडंट हैव टू स्पेंड एनी मनी टू रेज फ्लोट, रेज इन्वेस्टमेंट असेट्स. ऐसे समझो. ओके, ऑलराइट, तो क्या है, अगर आप कॉस्ट ऑफ फ्लोट देखो, मैंने सबके लिए कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे. स्टार हेल्थ का यू जस्ट सॉ कि इट्स वी जस्ट एस्टिमेटेड इज -2.1. -2.1 मतलब दे, इनका कॉस्ट है 2%. In FY23 and FY24, Star Health का there was no cost. मतलब they were paid 1.5% and 0.6% to acquire float. Okay? ICICI Lombard का भी मैंने कैलकुलेट किया है, इनका भी कॉस्ट ऑफ फ्लोट was in FY24 -2% है. FY23 में ओके, I'll have to check whether जीरो था या जो भी था, I'll have to double check.
बट एज एन एक्सरसाइज, ओके, एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, आप कैलकुलेट करके बताओ मुझे कि आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का कॉस्ट ऑफ फ्लोट क्या है। गो डिजिट का मैंने कैलकुलेट करके रखा है। इन FY24 इट वाज 5.5 एंड नाउ 4.2%। ओके, तो इसमें कैसे बेंचमार्क कैसे करें, कौन सा कॉस्ट ऑफ फ्लोट अच्छा है कौन सा नहीं। एक थंब रूल ये है कि आपका कॉस्ट ऑफ फ्लोट शुड बी लोअर देन मार्केट रेट ऑफ मनी। मतलब अगर आप 2% में पैसा उठा रहे हो, okay? अगर आप वही पैसा मार्केट में जाके, इफ यू गो टू अ बैंक एंड रेज दैट सेम अमाउंट, इफ यू गो टू एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंडिंग, व्हाट इज द रेट एट व्हिच यू रेज दैट फंडिंग? Okay, if the cost of float is below your cost of borrowing over time, then the insurer is raising float well below the market rate of money, and over the long term you will do really well. Okay, तो इसका मतलब आपको, अगर मान लो 5% में आप बाहर से पैसा उठा सकते हो, लेकिन आपका कॉस्ट ऑफ फ्लोट 3-4% में है, -3-4% में है, इसका मतलब आप अच्छा कर रहे हो। तो इनफैक्ट आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, ऑल्दो हमने देखा उसका कंबाइंड रेशियो 100 के ऊपर था, okay? लेकिन इसका कॉस्ट ऑफ फ्लोट सिर्फ 2% है। okay? ऑलराइट, और मेरे ख्याल से वेरी सिमिलर कॉस्ट ऑफ फ्लोट FY25 में भी होगा। okay? तो कंसिस्टेंटली आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एट मेंटेनिंग इट्स कॉस्ट ऑफ फ्लोट अंडर कंट्रोल, ऑल्दो ऑल्दो उसका कंबाइंड रेशियो 100 से ऊपर है। ओके, तो ये आपको चेक करना है, आपको कॉस्ट ऑफ फ्लोट ओवर टाइम चेक करना है। ओके, आपको कॉस्ट ऑफ फ्लोट ओवर टाइम चेक करना है और देखना है, यू हैव टू compute cost of float over time and check if it's lower than cost of borrowing. See, this is very important. I know I'm stressing on it. Okay, सिर्फ कंबाइंड रेशियो देख के, एक्सपेंस रेशियो देख के, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देख के प्लीज डोंट जंप टू एन इन्वेस्टमेंट। आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जल्दी हो जाता है। इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन देखो, कैलकुलेट कर लो, ठीक है, हर साल की कैलकुलेट करो, पिछले 4-5 साल मिनिमम, ठीक है। तब आप एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि ये किस रेट पे पैसा उठा रहे हैं। जैसे बैंक्स के लिए देखते हो किस रेट पे पैसे उठा रहे हैं, इनके लिए भी देखो भाई कौन से रेट पे पैसा उठा रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। द सेकंड पॉइंट, पैरामीटर which again is falls under ROA, which drives ROA, which impacts ROA is got float retention period। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, एक चीज समझो कि ये बफेट, वॉरेन बफेट, व्हाट ही सेड इज you got to you got to calculate what is the float size relative to premium। okay? अगर आप स्टार हेल्थ और नीवा बुपा, और या खुद से भी कर सकते हो आप। okay? इनफैक्ट स्टार हेल्थ का अगर आप करो, स्टार हेल्थ का आप फ्लोट, हमने देखा कुछ 18,000 का फ्लोट था इनका। इनका प्रीमियम भी है, अगर इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देखो, दैट्स ऑल्सो अराउंड 18,000। तो इनका फ्लोट और प्रीमियम साइज ऑलमोस्ट सेम है। वन, नीवा बुपा का भी ऑलमोस्ट फ्लोट और प्रीमियम साइज ऑलमोस्ट सेम है। okay? अगर आप आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के लिए और गो डिजिट के लिए सेम कैलकुलेशन करोगे, यू वुड सी कि मल्टी लाइन इंश्योरेंस का टिपिकली फ्लोट साइज इज ऑलमोस्ट ट्वाइस as that of their premium collection in a given year। Okay, and again as an exercise, please compute this value for ICICI Lombard for FY25। that's your homework, that's your exercise। comment section में बताना कि कितना कैलकुलेट करके आपको आया। ओके, राइट, तो सी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ना, मल्टी लाइन इंश्योरर्स, मतलब इनफैक्ट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, मल्टी लाइन इंश्योरर्स दे हैव अ हायर फ्लोट साइज रिलेटिव टू प्रीमियम। ओके, और हायर द फ्लोट साइज रिलेटिव टू प्रीमियम, उससे क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि यू आर हायर इज द फ्लोट रिटेंशन। इसका मतलब आप फ्लोट को अपने पास बहुत टाइम तक रिटेन कर पा रहे हो, यू आर एबल टू रिटेन फ्लोट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसका ये मतलब हुआ। और जितना रिटेन कर पाओगे पैसा अपने पास, रिटेन कर पाओगे, उतना आप इंटरेस्ट इनकम कराओगे, कमाओगे उस पर। सिंपल लॉजिक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि अगेन ये कॉस्ट ऑफ फ्लोट और फ्लोट रिटेंशन पीरियड आपको मिलेगा नहीं कहीं, आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक एक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए कि ये इंश्योरर कैसा है, ये फंडामेंटल एनालिसिस होता है इंश्योरेंस का। ओके, केवल कंबाइंड रेशियो, एक्सपेंस रेशियो देखना नहीं होता है। ओके, और ये बहुत जल्दी कैलकुलेट भी हो जाता है, लेकिन होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा होता है कि क्यों हम ये कैलकुलेट करेंगे। ओके, ऑलराइट, तो इनफैक्ट समवन आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन ऑन ऑन यूट्यूब कि कि do multi-line insurers, do they have an inherent advantage over monoline insurers? Okay, and let me show you my response as well. All right, as I was saying, someone asked me this question on YouTube, so I made a LinkedIn post on it. Okay, so if you see, okay, so as for me, to evaluate how multi-line, monoline general insurers are different, okay, one key aspect that you need to look at is float holding period. Okay, that we just covered. Okay, multi-line insurers seem to be retaining float for longer. Why do you think?
First reason is because, of course, multi-line insurers are diversified. Let's say, so they are hedging their bets. If one segment doesn't do well, okay, then they can always focus on the on the other segment. Okay. The other reason is, if you read this, standalone health insurers seem to be struggling, okay, with frequent claim payouts. Despite better claim ratios, they have frequent claim payouts and hence suboptimal float retention versus other general insurance segments. So see, इसका ये मतलब नहीं है कि general insurers are multi-line general insurers are better than monolines standalone health insurers. Doesn't mean that. Okay, but certainly diversified businesses in this case, like multi-line insurers, ICICI Lombard, Go Digit, or any other multi-line insurer, they have this float retention advantage. Okay, or float retention is something which is very important in this business, as we just understood. All right. Okay, so let's just move forward. All right. Okay. See, we looked at ROA. See, in fundamental analysis, आपको ROA के अंदर cost of float retention देखना है, because of course both of them they contribute, they drive ROA. Okay. तो next चीज आपको क्या देखनी है? Leverage. Okay. Leverage क्या है? कि per every rupee of equity, how much investment assets you have been able to accumulate over time. Okay. So यहाँ पे क्या है? मैंने already I've estimated investment leverage. Okay, this is investment leverage for all these insurers ahead of time. Again, you do it for ICICI Lombard. How you do it? You just divide assets by equity, investment assets by equity. Okay? Now, in the case of insurers, the higher the investment leverage, the better it is. Okay, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है. Okay, typically higher the investment leverage, the better it is. Okay, and why do you think? Why do you think कि multi-line insurers like ICICI Go Digit, they have a higher investment leverage than let's say the likes of Star Health and Niva Bupa. One reason which in my mind is because see, insurers which have high float retention, जो float बहुत time तक अपने पास रख पाते हैं, okay, they drive a higher investment leverage. They are able to drive a higher investment leverage. क्योंकि of course अगर आपके पास float बहुत time तक है, जो हमने देखा, that's which is the case with ICICI and Go Digit, all the multi-line insurers, okay, then you are able to earn a high interest income. Okay, higher interest income. So and that interest income also gets added to your investment assets over time. Okay, so आपके investment assets बढ़ते हैं, and of course तो उससे क्या होता है? You are able to drive a higher investment leverage. Okay, तो एक ये factor होता है. तो next factor of course आपको क्या देखना है? Growth is, see, केवल आपको हमने ROE का expansion या ROE का breakup देख लिया, ROE and leverage. केवल ROE is नहीं देखना है आपको. Beyond ROE आपको क्या देखना है? Growth तो सबको चाहिए ही. Okay, so here I have listed a few parameters which I would not get into in this in the interest of time, but of course you have to analyze कि किस तरीके से grow कर रहा है insurer, what's the market share, okay, how is the market share growing over time, okay, and then what I have here नीचे, the fourth item, very important, okay, is क्या claim rejection है and what is the policy renewal ratio. Okay, तो क्या है claim? ये दो चीजें very important to check जब आप fundamental analysis, when you're doing fundamental analysis of an insurer. Okay, तो claim rejection आपको कहाँ मिलेगा? If I go to the next slide, okay, okay, so this is a snapshot from a video I made on health insurance industry. तो क्या है? There is a general insurance की general insurance council है, okay, की website है, उसमें you get the claim rejection ratios of all the insurers, of all the general insurers in India. Okay, so I've spoken about it a whole lot when I made this video on understanding health insurance industry in India. In fact, some other videos as well. So I'll put the link in the description. So if you see यहाँ पे, this is a little dated. Okay, लेकिन अगर see Star Health का अगर आप देखो, I'm hoping that this is visible. Star Health का claim rejection ratio is very high at 18.5%. Okay, and in 2023, and Niva Bupa का claim rejection ratio was around what 9.1%. ये तो काफी हाई है. वीजा ही आईसीआईसी लॉम्बार्ड का देखो, okay, तो इसका क्लेम रिजेक्शन रेशियो इज अराउंड 5% एंड इंक्लूड्स ऑल द लाइन्स ऑफ इंश्योरेंस. ओके, तो इससे ऑफ कोर्स यू कैन गेट अ सेंस की सी इफ यू रिजेक्ट अ लॉट ऑफ क्लेम्स एंड ऑफ कोर्स योर एंड कस्टमर्स may not be very happy, or probably the reason is because there has been a lot of insurance mis-selling as well. Okay, तो इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस इज अ पुश प्रोडक्ट, तो कस्टमर को कुछ बेच दिया गया है which probably the customer doesn't understand, and then customer requests for a claim and insurer बोलता है नहीं भाई ये तो कवर नहीं होता. Yeah, and this happens a lot in health insurance.
Okay, तो probably this may I don't know, but that's your judgment. That of course आपको analyze करना है. लेकिन Star Health में or single line insurers में, let's say if there is a rapid growth in the number of agents, okay, uh, then there may be some agent mis-selling that may have happened, and that's why there's a lot of claim rejections that have happened as well. Okay, और केवल ये रेशियो देख के आप ये मत डिसाइड करो कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है. Okay, you also have to look at policy renewals rate as well. वो भी आप चेक करो. Okay, तो any which ways, तो hopefully आपको you now have a very good sense of कि what is it that you need to analyze. Okay, these 4 things that you need to analyze in an insurance business. ROA के अंदर cost of funds, float retention period, leverage आपको देखना है, आपको growth देखना है, and then also you need to check for certain risks like the ones that I have. Okay, these are some of the key things that you got to look. और एक बार आप समझ गए business model तो आप ये बहुत जल्दी देख पाओगे. Okay, all right. Okay, so yeah, so I am not getting into valuations per se of all these insurers. Okay, but you would see ICICI Lombard right now is trading at a premium. The metric that you use to analyze insurance business, PB metric, price to book. Okay, so price to book ICICI is higher than all the other general insurance companies because I think of the way it is managing, the way it is keeping its cost of float, at low levels, and also because of its high float retention period. Float बहुत time तक it's able to retain. Okay, and of course it's getting the advantage of being diversified. Okay, so and claim rejection ratio be controlled here. Okay, so anyways, hope this was helpful. Now let's move on to the next key. How do we do fundamental analysis of banks? तो वो देखते हैं. Hope you are finding my content valuable. If you are an investor interested in learning thorough fundamental analysis and valuation, or if you're an aspiring equity research analyst, okay, who is interested in learning these skills to get into such roles, then I have a program suited to your needs. Okay, so in my program, I cover quality and well-researched content. Okay? I cover diverse industries. Okay, and the topics that I teach in this program through live exercise and case studies are financial statements. I also teach you how to analyze and interpret financial and operating ratios. It's pretty extensive. Okay. And how to assess the forensics and how to analyze the quality of the management, how to read con calls and annual reports, okay? How to analyze an industry and how to size the market. Okay. How to assess moats in a business, financial modeling, and valuation. And I also help you to form and articulate your investment thesis. So if you're someone who thinks who will be benefited by this program, then feel free to reach out to me at my email or reach out to me on LinkedIn. All right. Thank you.